Hello everyone, welcome to Inspiron Technologies. I hope all of you will be doing very well in your career aspiration. Well, today's topic is what is data analysis and data mining. आपने डेटा एनालिटिक्स पोजीशन के लिए बहुत कुछ सुना होगा एंड ये बूमिंग सेक्टर है एंड इसके बारे में डेली आपको कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलते ही रहते होंगे. पोजीशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड ऑल्सो अबाउट बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा माइनिंग. सो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि डेटा एनालिसिस क्या है और डेटा माइनिंग क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं, इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है. इस पूरे सेशन को अच्छे से आप वॉच करें एंड दिस इज गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन. एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स बिगिन हियर. First part that we should understand that data around us. There is an undefinable, this is undeniable fact that data surround us on every corner. Definitely we find data everywhere. Like if you visit social media, you tend to upload images, you tend to upload videos, you also tend to upload your different songs. So this is what generating data. Today's era is fortunate enough to see the growth of the internet and every benefit which comes with accessible information sharing. So there is a lot of data around us and this data creation continues and it will go forever. And इस डेटा को क्रिएट करने वाले कौन है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जानने का. और आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि हम सब इस डेटा को क्रिएट करने वाले हैं. अब ये जितना भी डेटा क्रिएट हो रहा है, क्या हमारे लिए यूजफुल है? आइए जानते हैं कि किस तरह से हम डेटा को क्रिएट करते हैं. सो आवर कंट्रीब्यूशन इन जनरेटिंग डेटा. टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, वी ऑल कंट्रीब्यूट इन जनरेटिंग डेटा. जैसा कि आप जानते हैं, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. So everyone has certain objective, everyone has certain goal, and to fulfill that goal, to fulfill that perspective, everyone is generating data. Like I'm making this video to inform you about data analysis and career aspiration as a data analyst. So this is my perspective, and this video that I'm generating, that I'm creating right now is gonna add data on internet. जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेट इज www, वर्ल्ड वाइड वेब. तो इसकी जो लिमिट है, देर इज नो लिमिट. एंड किस तरह से हम डेटा क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, वो सारे क्लिक्स जो आप इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए करते हैं, दे ऑल आर जनरेटिंग डेटा. कोई ना कोई आपका क्लिक एक हिटिंग जनरेट कर रहा होता है, जो यूआरएल हिट हो रहा होता है, वो इंटरनेट पे अपनी एक रेटिंग, रैंकिंग जनरेट कर रहा होता है. तो वो सारे क्लिक्स जो हम इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर, एनहांस करने के लिए करते हैं, वो सभी डेटा जनरेट करते हैं. हमारी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, हम बार बार इंटरनेट ब्राउजर ब्राउज करते हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया में हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को विजिट करते हैं. तो जो भी हम ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी मेंटेन कर रहे हैं, बहुत से लोग ग्रीन लाइट जलाए अवेलेबल रहते हैं सोशल मीडिया नेटवर्क्स में, दे ऑल आर जनरेटिंग डेटा. जो वेबसाइट्स हम विजिट करते हैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन के लिए, एंड जो अमाउंट ऑफ टाइम हम देते हैं वेबसाइट्स में, एवरीथिंग इज जनरेटिंग डेटा. और ये जो डेटा हमारे आसपास जनरेट हो रहा है, इज दिस यूजफुल? आइए बात करते हैं फर्दर कि जो डेटा जनरेट हो रहा है वो किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल होता है. डेटा प्रोसेसिंग और डेटा माइनिंग किस तरह से इसमें इंप्लीमेंट होते हैं. सो डेटा एनालिसिस की अगर बात करें तो विद प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, द जनरेटेड डेटा कैन देन बी रिफाइंड and transformed into relevant insights leading to a large corporation's decision and dictating their profits. एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि फर्दर उनकी डिसीजन मेकिंग क्या होनी चाहिए, और वो फर्दर डिसीजन मेकिंग वो जस्टिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर रिपोर्ट्स. जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, डिफरेंट ग्राफ्स आर देयर, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज ग्राफ्स दे कैन कंक्लूड that what decision is to be taken.
right? So this is really very important. Now I'm talking about data analysis that has multiple facets, approaches, encompassing diverse techniques under a variety of names and is used different business, science and social science domains. Further about analysis in today's business world, data analysis plays a role in making decisions more scientific and helping businesses operate more effectively. So that's going to be really, really very beneficial because these graphs, these standards make a person understand that what further strategy is to be followed. So data mining, when we talk about data mining, this is a particular data analysis technique that focuses on statistical modeling and knowledge discovery for predictive rather than purely descriptive purposes. So this is a subset of overall data processing, overall data analysis. Mining means making different chunks of data, making different sub sets of data in which you can have more insightful, more in-depth analysis. तो अगर हमें एक लार्ज डेटाबेस से कुछ छोटे छोटे चंक्स अगर हम क्रिएट करें तो हम उनकी और बेहतरीन एनालिसिस कर सकते हैं. So data mining plays a very important role. Here we have present data, business goal, identify data, prepare data, model and evaluate data. Data mining involves the intersection of machine learning, statistics and databases, whereas data analysis requires the knowledge of computer science, statistics, mathematics, subject knowledge, AI, machine learning. Data mining is based on mathematical and scientific models to identify patterns or trends. Data mining is a process of extracting usable data from a large set of data जिससे कि एनालिसिस प्रॉपर हो सके. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से डेटा को शॉर्ट और छोटे चंक में हमने उसे डिवाइड किया है. सबसेट है डेटा एनालिसिस का. इट इम्प्लाइज एन एफिशिएंट एंड कंटिन्यूअस मेथड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड डिस्कवरिंग हिडन पैटर्न्स एंड डेटा थ्रू आउट ह्यूज सेट. सो डेटा माइनिंग एक इम्पॉर्टेंट फेज है और मशीन लर्निंग मॉडल्स को ये बिल्ड करता है और अब फर्दर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है. सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल एल्गोरिथम सेगमेंटिंग द डेटा एंड इवैल्यूएटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट्स. फ्यूचर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी एग्जिस्टिंग डेटा से ही आती है और एग्जिस्टिंग डेटा को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करके उसकी एनालिसिस करना, प्रॉपर डैशबोर्ड में ग्राफ्स देना, that's what the data mining is. All this information is retained as a data warehouse which is then used for business intelligence purpose. आपने short form में BI का नाम सुना होगा. There are numerous definitions and views, but all would agree that data analysis and data mining are two subsets of business intelligence. तो superset की बात करें तो business intelligence है और subset data mining, data analysis दोनों ही important है. Data mining is generally part of data analysis where the objective or intention remains determining or discovering merely the pattern from data set. On the other hand, data analysis occurs as an entire package for making sense from the database that may or may not include data mining. जरूरी नहीं है कि डेटा प्रोसेसिंग में डेटा माइनिंग हो, बट डेटा माइनिंग एक स्टेप है जिससे कि हम उस एनालिसिस को करते हैं. So this was all about this session, data mining and data processing. If you are expecting a course on this, call at this number. Thanks for watching this session.